Hello everyone, welcome to Aptly Academy for Civil Services. There's a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. Let's get started with today's topic list. Today is 27th of November. The first topic is Omicron, the new variant, as a variant of concern which has been recently announced by the WHO. Second is latest multidimensional poverty index, which was released by Niti Aayog. Third is internal working group report on corporate banking. Second last, India, Russia, China meets reveal the Indo-Pacific gap. And the last is an editorial from the Hindu. Indian agriculture needs a Varghese Kurian, right? So these are all the important news and editorial for the day. Apart from this, at the end of this video, there would be some MCQ based question. This would be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. If you want to practice more important MCQ questions, we have a test series for you. 60 high quality tests would be provided in this test series along with 12-month subscriptions of the IAS Gazetted magazine. So do check it out. मैंने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first news of the day, that is Omicron, the new variant of concern. This is the COVID-19 new variant, which is creating a chaos across the globe. Not only for specific region, but पूरे world के लिए concern है, क्योंकि WHO ने इसको variant of concern बोला है. Something which is important for General Studies Paper 2, issues related to development and management of health. So what development has come that recently WHO, the World Health Organization, has declared the newly discovered, this is a strain which is named as B.1.529. This is a strain of COVID-19 which is now considered as a variant of concern, right? एक तो होती है variant of interest जिसको VOI कहते हैं. This is a variant of interest and the other is variant of concern, right? And WHO ने इस strain का जो नाम रखा है that is Omicron. This name become important and this is associated with South Africa. तो बात करें इस variant के, this was first reported in South Africa on 24th of November 2021 and as per WHO it spread more quickly than any other form of the COVID-19 that is still known to mankind. Classification की अगर बात करें, the classification put Omicron into the most troubling category of COVID-19 variants along with the globally dominant जो variant सबसे पहले जिसने बाद में second COVID wave में सबसे ज़्यादा जो dominant रही that is Delta plus and it's weaker that is Alpha, Beta and Gamma. I'll give you a particular image that will help you understand about the variant. So this is the variant of concern और उसके बाद the variant of interest, VOC and the VOI. So VOC की बात करें, Alpha variant, this is from United Kingdom, Beta from South Africa, Gamma from Brazil and Delta is from India, right? तो आपको ये याद करना ज़रूरी है. You can take a screenshot of it. In many competitive examination, they can ask you the match the variant with the country. Even UPSC can ask you, right? तो ये आपको पता होना चाहिए. So 4 is a variant of concern जो अब एक और add हो गई है Omicron इसमें. So there would be 5 in number. And talking about the variants of interest, VOC की बात करें. So this is like Ellipson from United States, Zeta from Brazil, ETA from multiple countries, Theta from Philippines, IoT from United States and Kappa is again from India. तो इंडिया की दो वेरिएंट है, डेल्टा और कापा. So this thing should be known to you. Now बात करें जो preliminary investigations की गई that suggests that an increased risk of infection is there and इसके decremental chances हो सकते हैं COVID-19 की epidemiology पे. And infection in South Africa has risen steeply in the recent week. बहुत सारे countries ने basically उस context में अपनी flight वहाँ से ban की है. We'll discuss that also. While medical expert warned that any overreaction before the variant was better understood, हर nation को ये ज़रूरी है कि वो अपने air travel को hold करे. Market fell sharply, जो market थी वो भी deteriorate की है इस वजह से, and scientists held that an emergency meeting is required to consider the fact that this is something which we need to control at first instances. WHO ने जब पहले COVID-19 की first wave आने वाली थी उससे पहले भी alert किया था, but some country has taken it seriously, some has not. The reason being we have suffered a lot for none less than 18 months. So this is a time that the government of India and many other government need to be aware thoroughly.
So you can see these are the two Twitter tweets that were tweeted, one from the WHO और दूसरी जो है वो US के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया. So what the WHO said कि हमने नई वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न रेज किया है और उसका नाम रखा है ओमिक्रॉन, which is again very concerning for WHO and for the entire world. So in this context, what US has decided, they have decided कि वो जितने भी साउथ अफ्रीका से फ्लाइट्स हैं उनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव restricted the flight from 7 other countries. So these are the some strategical steps taken by the United States. Although government of India ने अभी कोई formal announcement नहीं किए, but this is defaultly accepted कि हाँ इंडिया भी इस तरह के announcement करेगी. And this is a time that we need to track. Very initial phases is very challenging for any country when a new variant arises. बात करें रिपोर्ट ऑन ओमिक्रॉन केसेस में किस तरह से बेल्जियम वाज द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री दैट अनाउंस द केसेस ऑफ वेरिएंट और 27 नेशन जो हैं यूरोपियन यूनियन के दे हैव इम्पोज्ड अ टेम्पररी बैन ऑन एयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड टम्बल्ड फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. The member nation of the EU has experienced a massive spike in the cases recently. So you can say the cases is already being witnessed in the European Union countries, as well as some cases were also reported in many developed countries. So how a variant mutate and what are the functions, technicality that actually take place? So what are the changes and how this happened in the COVID-19 variant? The first अगर आप एक स्टेजेस की बात करें तो एक स्टेज यहाँ पे है जहाँ पे हाई नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ म्यूटेशन, राइट. when we have high number of cases, the risk of mutation tend to increase. The second condition is that some mutations lead to new variant, right. So this is a two typical scientific temperament backing that is being given under this two argument. आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. You can pause this video, you can read it out. Now moving to the second news, that is latest multidimensional poverty index. This was released by Niti Aayog. This news is important for General Studies paper 2, government policies and intervention. So what is there in this news? According to the multidimensional poverty index, which was released by the government think tank, that is Niti Aayog, they have noted over 50% of Bihar population is multidimensionally poor. So काफी astonishing results हैं survey से, but this is a ground reality that India has witnessed. The state has the maximum percentage of population living below the poverty, and among the states or union territories की सारी की ranking दी गई. Will start the ranking also. Will see the detail of the state's performances as well as the performance of the union territories. तो स्टेट परफॉर्मेंस की अगर बात करें एज पर मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको MPI भी कहते हैं शॉर्ट में, 51.91% पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज पुअर, फॉलोड बाय झारखंड विच हैज 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.79%, मध्य प्रदेश 36.65% एंड मेघालय 32.67%. वहीं केरला की बात करें, दे हैव लोएस्ट पॉवर्टी लाइन दैट इज 0.71, फॉलोड बाय पुडुचेरी 1.72, लक्षद्वीप 1.82, गोवा एंड सिक्किम. You don't have to remember any percentage, but आपको क्रोनोलॉजी में ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट की परफॉर्मेंस टॉप में है और किसकी परफॉर्मेंस वर्स्ट में. So this is an infograph, basically a map that is there in the newspaper also. यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. You can see the entire state is being there, जहाँ पे जिसकी परफॉर्मेंस है accordingly उस कलर कोड से उनको रेट की गई है. This is a color code mentioned over here. What is the purpose of this index? Why government come up with this index? So the national MPI measures the global accepted robust methodology, जो कि ऑक्सफोर्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, साथ के साथ ये UNDP के साथ मिलके काम करती है. So this become very authentic for government to formulate a policy and to know the real-time status of the poverty in the country. So the government national multidimensional poverty index is an important contributions towards institutionalizing the public policy. गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी बनाएगी तो उनको पता होगा कि किस सेक्शंस में, किस स्टेट्स में किस तरह की पॉलिसी बनाने की जरूरत है. Which also monitor the multidimensional poverty, informal evidence-based focused interventions, thereby ensuring no one is left behind. So this type of policy, this type of survey help governments a lot while they formulate any policy, right? And importantly, a measure for multidimensional poverty, it's capture the multi-stimulus deprivations from the household, right?
बात करें कुछ अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, वेयर लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन पुअर. तमिलनाडु which like 4.89, अंडमान एंड निकोबार 4.30, दिल्ली 4.79, पंजाब 5.57, हिमाचल प्रदेश 7.62 and Mizoram is 9.8, right? So these are the percentage and performances for this other state and union territories. Now this is again an infograph talking about the poor state performance, which we have discussed. Prosperous states is this category and union territories में ये सारी categories है, right? National MPI's data set from NFHS ranking from the basis of other states. This will help the state to complete and improve across the sector. और नीति आयोग ने कहा है ये significant improvement है पिछले के मुकाबले. इंटरनल वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट बैंकिंग. आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाई थी. दे हैव गिवन देयर रिपोर्ट हाउ द कॉर्पोरेट बैंकिंग कैन फंक्शन इन इंडिया, बट आरबीआई ने उस पर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखा उस बातों से. दे हैव नॉट बीन फाइनली एग्रीड, नीदर दे हैव डिनाइड इट, राइट? विल सी व्हाट इज द आरबीआई टेक ऑन दिस, समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट. So the central bank has opted neither to accept nor to reject the proposal that was given by the इंटरनल वर्किंग ग्रुप. ना ही उनको एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया, बिकॉज ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है वो कह रही थी कि लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को भी प्रमोटर्स ऑफ बैंक की तरह अलाउ करने की जरूरत है बाय अमेंडिंग द नेसेसरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. So this is what the working group has to say, but RBI has accepted 21 out of 33 recommendations and did not comment on issues granting banking license to big corporates. तो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस के लिए अभी आरबीआई ने फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं दी. एंड आरबीआई हैज मेंटेन्ड अ स्टेटस को ऑन द कॉर्पोरेट एंटिटी इनटू द बैंकिंग स्पेस. तो जो अभी की यथास्थिति है, स्टेटस को इज अ सिचुएशन वेयर व्हाटएवर इज लाइंग विद दैट वुड स्टिल कंटिन्यू, उसको स्टेटस को कहते हैं. सो स्टेटस को मेंटेन रहेगी इस कंटेक्स्ट में. इंटरनल वर्किंग ग्रुप की अगर बात करें, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है. द रिपोर्ट सेज दैट द ओनरशिप गाइडलाइन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक रिलीज्ड इन नवंबर 2020. तो आईडब्ल्यूजी ने प्रपोज किया था कि दैट आरबीआई में एग्जामिन द नेसेसरी लीगल प्रोविजंस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू डील विद द कंसर्न एंड ग्रांटिंग लाइसेंस टू द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस. आरबीआई doesn't accepted that. They have also accepted the recommendations on cap on promoters run 15 years should be raised from the current level of 15% to 26%. जो paid up voting equity है इसके बारे में बात की गई. And it said that the small finance bank should be listed within 8 years from the date of commencement of operations. तो ये सारे कुछ important recommendations थे जो RBI ने accept किए. Now Russia, India, China meet reveals Indo-Pacific gap, something which is important for General Studies Paper 2. Bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. The virtual meeting हुई between the foreign minister of Russia, India, China, and they have revealed their inherent difference among the three countries for the future of Indo-Pacific. Indo-Pacific has been the most burning topic for your examination also. और अगर बात करें bilateral issues में एक खास करके इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेक श्योर यू कलेक्ट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड. सो द डिस्कशन रिवील दैट रशिया एंड चाइना कंसीडर द इंडो पैसिफिक एज एन एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट. व्हाट दे सेड दैट इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, राइट? उन्होंने ये नोशन भी दिया है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो इंक्लूसिव है इन कंट्रीज के लिए, राइट? सो चाइना इन एनी वे दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इन द पैसिफिक रीजन, right? Now India stand की अगर बात करें, India along with the United States, Japan and Australia has formed a quadrilateral framework to ensure free and open maritime lanes in the Indo-Pacific region, right? So this is something which is important for India. China की अपनी stand है. China ने कहा है, China indirectly referring to the Quad initiative, they have said that these three countries are jointly dealing with the global challenges. And they have referred, basically it referred means China have referred Sino-India spirit as an openness, solidarity, trust and cooperative for fighting the epidemics as well as the stability of the world. So somehow China want to play diplomatically, they want to have the dominance in the region. At the same time, China want to have a get together with the Quad initiative as well. And China has opposed the democracy summit that is chaired by the United States of President. जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो इसको चेयर कर रहे हैं उसको भी चाइना ने फॉर्मली अपोज किया.
Now the other news, this is basically an editorial about Indian agriculture needs a Verghese Kurian, something which is important for General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sector. So इस editorial के अंदर 3 important subheads हैं, only as a cooperative model, charting a path, and questions focus on digital revolution. So we'll see the important detail of this editorial and we'll understand the context, how the reform that was taken by the Verghese Kurian, who is also known as the man behind the milk revolutions. So किस तरह से उसको agriculture में convert कर सकते हैं उसके बारे में जिक्र है. So 26 November celebrated as a Kurian Day. It was the 100th anniversary and he has a deep understanding of Indian farming and he has been earning जो farming community में उनकी काफ़ी respect है because of the possible solutions that he has given to agriculture. और ये कहा गया है कि अगर उन्होंने जो फॉर्मूलेज दिए हैं वो इम्प्लीमेंट होती तो फार्म क्राइसिस को बहुत हद तक सॉल्यूशन दिया जा सकता था. एंड इज वाइडली साइटेड एज ऑब्जर्वेशन जहाँ पे इस पार्टनरशिप बिटवीन द विजडम एंड रूरल पीपल इज देयर. कहीं ना कहीं जो गुजरात में आनंद प्ले एक जगह है जहाँ पे अमूल की स्टैब्लिशमेंट की गई, एक स्किल ऑफ प्रोफेशनल्स लोगों ने कैप्चर किया एंड इट इज हिज लाइफ एंड एसेंस विच इज बीइंग डिपिक्टेड देयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट. So there was a time when Kurian seems to be immoral architecture of the rural revolutions, where he has transformed the life for millions of people, right? At that time where farmer people, especially with the dairy sector, were not that aware कि उनके प्रोड्यूस को दूसरे जगह पे सेल भी किया जा सकता है, right? So this man has given a vision. There were many saw that him as outsider of the world क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए थे. He has educated in Western educations and he studied the subject like metallurgies, which was way far from the agriculture. But what he did, he has made the cooperative society of Amul, which is flourishing till today. So Verghese Kurian won the farmers over his professional integrity, his vision, his center role over the farmer journeys and development. And the foundation of the Kurian went on designing the Amul cooperative and turns into the global baron. He has launched wide revolutions which make India largest milk producing country in the entire world. So you can see the thought process of this man which has made India the world's largest producer of milk. And central to Kurian vision was on cooperative models for the business development also. बात करें इनकी पाथ और कुछ क्वेश्चंस की, तो कुरियन बोरोड देयर प्रैक्टिसेस फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. उस टाइम पे जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, देन ही हैड एक्चुअली स्टडीड इन फॉरेन कंट्रीज और वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी को बोरो किया. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी के स्ट्रैटेजीज हो, प्राइवेट सेक्टर कैसे फंक्शंस करती है, कैसे उसको ग्लोबलाइज करना है, एवरीथिंग वाज देयर, राइट. एट द सेम टाइम अमूल इमर्ज्ड एज अ इमर्जिंग लेबोरेटरी जहाँ पे बहुत सारी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की जा रही थी. एक कॉम्पिटिटिव मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बनाने की कोशिश हो रही थी. एंड अमूल हैज अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू वाइल कन्वर्टिंग द बफेलो मिल्क इनटू स्किम मिल्क, और उसको फिर पाउडर मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क में बनाने की टेक्नोलॉजी उस समय तक डेवलप हो चुकी थी. इट वॉज अ सिंगल इनोवेशन दैट गिव अमूल अ डिस्टिंक्टिंग कॉम्पिटिशन among the adult producer in the Gujarat and beyond. Now we can see that Amul is being there in pan India. पूरे इंडिया में हर एक ऐसी छोटी शहर में आपको अमूल के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जरूर मिलेंगे. एंड अमूल बेटर इज डेफिनेटली नो बीटेबल, दैट इज देयर इन पैन इंडिया. नाउ 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आती हैं कुरियन की जो लेगेसी है, जो कंट्रीब्यूट हुई है और आगे भी चल रही है. द फर्स्ट इज अमूल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर एंड इट्स आइकॉनिक हैज लेफ्ट इन 2012, राइट. अगर बात करें Verghese Kurian की has actually left in 2012. Second, how far the cooperative movement in general, उनकी जो ऑब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितनी अच्छी रही ग्रास रूट लेवल से. ये क्लासिकल एग्जाम्पल है अमूल की तरफ से. एंड अमूल कंटिन्यू टू रिमेन इंडियाज बेस्ट फूड ब्रांड एंड इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर डेयरी कोऑपरेटिव्स. इसके बाद नंदिनी इन कर्नाटका, अवन इन तमिलनाडु एंड वर्का इन पंजाब, दे आर ऑल्सो doing their best that they can do in their states, right? तो इससे एक इंस्पिरेशन से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है. नाउ डिजिटल रिवोल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है. सैडली अमूल की जो सक्सेस है दैट हैज नॉट बीन कैटलाइज इन द सिमिलर मूवमेंट अक्रॉस द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जो कि हमें कन्वर्ट करने की जरूरत थी. वी शुड टेक दिस एज अ प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेनी अदर एग्रीकल्चर फील्ड्स. So Indian digital revolution has bypassed the agriculture sectors. India talked about smart cities, not the smart villages, not even the liable villages. So these things are the government intervention that would be liable and they have to work upon it until unless we cannot achieve that.
So farmer society is still not uncommon. Weight heavily on nation consensus has to be there. Cooperative movement की बात करें is in India is a state flux, and it has suffered a lack of professional management, inadequate finance, and poor technology. So we need to upgrade this. Both the state government as well as the central government has to play a role where they can be a game changer in agriculture and many other cooperative societies. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For the second question, the correct option is D. Today's MCQ is related to SanDisk. आपको बताना इनमें से correct options कौन से हैं. GI enabled tracking system, social security differently abled people के लिए, instant messaging app by Government of India, a news for fertilizer developed by the ICR. So what you have to do, you have to choose the correct option. Write that in the comment section down below. Second is about the SAT, is a statutory body established by the provision of SEBI Act. The presiding officer of SAT should be appointed by the President of India, right? So this is more short of a repeated question, which is there for you to give me the correct answer if you know. Do let me know how many of you know the correct answer in the comment section down below. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.